Back to another episode of the Midas to Wealth Foundation to Wealth Mastery Journey with Vikas Joshi. Prepare to embark on transformative adventure designed to empower you with the knowledge and skills essential for navigating the complexities of wealth creation and management. This series is an attempt to guide you, starting from building a solid financial foundation to mastering the principles of wealth accumulation and preservation. As we journey together, you will find yourself on the path of financial independence, prosperity, and abundance. Join on as we unlock the secrets to financial success and unleash your wealth building potential with Vikas Joshi. Let's get started on this enriching adventure. ये श्रृंखला आपके प्रेरणाओं को जगाती है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता, समृद्धि और संपन्नता की दिशा में मार्गदर्शन कराती है. ये एक कोशिश है. दिस इज एन एफर्ट so as we improve on our wealth creation process, on our financial stability. So today's topic is, friends, balancing liabilities, the key to unlocking sustainable net worth growth. We have been discussing of various points which are necessarily the financial terms which are necessarily to be understood before we proceed further towards wealth creation part. This series will be taking a building on the base so that you understand what you are doing with your finance. मैं क्या कर रहा हूं? अरे मेरा काम तो मैं कमा के सिर्फ दे रहा हूं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को. दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, फ्रेंड्स. As we get a chunk of amount, we plan to hand it over to some investment advisor and we work according to whatever he has been stating, or we just giving the amount and rely on his capabilities without understanding that it is our money that is being put to risk. रिस्की है ना. अगर लॉस होता है तो वो आपका है, प्रॉफिट होता है तो आपका है. प्रॉफिट होता है बढ़िया, लॉस होता है तो मेरा हार्ड अर्न मनी चला गया. और चला गया उसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इसमें है कि मुझे पता ही नहीं था ये क्या कर रहा है. ये प्रॉब्लम है. एंड हेंस वी फेल्ट that we should have a sound financial base. We should understand the basic terms. It is not necessary that we by heart every term and we go into the details of all this. There's a course में होता है, graduation course तक होता है वो. No, we are not interested in that. We are just rebuffing our knowledge. We are just refurbishing our knowledge. We are just uh, having a try. An attempt is being made to अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. बस उतना ही है. हमको उतने सारे डिटेल्स में कैसा क्या होता है उसके वी आर नॉट गिविंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन, फ्रेंड्स, बट वी आर बिल्डिंग our wealth. That is, we wish that money generates money, and if at all there is a loss, it should not be because of my ignorance. ये बड़ा फैक्टर है, फ्रेंड्स. Hence ये attempt. So we have been discussing of the terms and we understood that it is a necessity that we should build on our net worth. And net worth is total assets minus total liabilities. So first of all, let us understand what net worth is. Oh, but we should understand the components first. Total assets, we understood them. And in detail, I have given you the importance of total assets in creation of net worth. So also, now we will be discussing on total liabilities and their importance in generating your net worth. And then we conclude with the net worth part, how it improves your projection, how it improves your financial stability, how it improves your financial projection or financial status projected in the society as a whole. So total liabilities. Total liabilities refer to the cumulative financial obligations you are having, or a company जो आपकी फॉर्म की होगी, आपका बिजनेस चल रहा होगा, you have those liabilities that own outside parties. बाहर से लिया हुआ पैसा जिसको आपको liability बोलते हो, वापस करना है ना उसको. These obligations take various forms including loans,
accounts payable, mortgages, and other forms of debt. Liabilities are typically categorized into two main types, friends: current liabilities, non-current liabilities. Now, in that current liabilities, we are just touching on the points today, and in the next episode, we'll be discussing on the details. So, the current liabilities, they include the accounts payable, short-term loans, account accrued expenses, tax payable, statutory requirement है वो तो करना ही पड़ता है. So you cannot keep on accumulating it is a liability you have to give off. So also the non-current liabilities, these obligations are that due after 1 year. So examples can be long-term loans जो ड्यू है आपके 1 साल बाद वाले, ईएमआई तो भरना है ना आपको उसका. Bonds payable, then deferred tax liabilities, आपने जो भरा नहीं है डिफर्ड कर दिया, आगे चल रहा है, चलता ही रहा है. Then mortgages. Now these are the two basic things into the liabilities part. So the importance of liabilities in the total net worth creation is it is essential or it is crucial to understand the importance so as to assess yourself, your financial health, and creating the net worth. So the net worth calculation is total assets minus total liabilities. Total liabilities directly impact the net worth on the equity or entity. Higher liabilities reduce net worth while lower liabilities enhance it. So the equity नहीं entity. So the entity part मतलब आप खुद या आपकी कोई कंपनी या आप जिसमें पार्टनर हो वो कंपनी, whatever you have invested in, that company's net worth, if the liabilities are more then the net worth is less. कॉमन है, क्योंकि अगर बाहर का पैसा ही ज्यादा लिया है बाबा वापस करना पड़ेगा, तो कंपनी स्टेबलाइज होने में टाइम लेने वाली है. और you yourself, I will be talking basically on individuals, that is you yourself. If you want to improve on yourself, reduce your liabilities. We'll be talking on in detail in the next episode. The credit worthiness increases. Lenders are and investors assess liabilities to determine the credit worthiness of the business or individual. Now I'll be talking on individuals only. I have written that in the company form also. High levels of debt might indicate potential financial risk, making it harder or more expensive to obtain financing. ज्यादा लायबिलिटीज लेके रखोगे तो जब मैं देखूंगा आपके बैलेंस शीट खुद का, जब आप अपने खुद को देखोगे, अरे बाप रे मेरा इनकम इतना आ रहा है, उसमें से मेरा पगार जो आ रहा है उसमें से मेरे इतने लायबिलिटीज जा रहे हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ गया. बिकॉज सस्टेनेबिलिटी कम हो गई ना मेरी. जो आ रहा है वो स्टैट्यूटरी, जैसे आपने लोन्स ले लिए तो उसका ईएमआई जा रहा है. जैसे मैं नौकरी पे लग गया तो मैंने गाड़ी ली, बंगला लिया, घोड़ा लिया, सब कुछ ले लिया ईएमआई पे. मैंने सोचा ही नहीं मुझे जिंदा भी तो रहना है, मेरी फैमिली भी तो है. नहीं ये सोचा था, लेकिन हमने सोचा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे. ये आमतौर पे हर घर में चलता है फ्रेंड्स. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेदर दिस इज द राइट मेथड और नॉट, एंड विल बी टॉकिंग इन डिटेल. So the liabilities part is also very important in creation of net worth, because if your credit worthiness is low, nobody is going to bank on you. आएगा बाबा इतना पैसा बाहर देना भी है, कमा रहा है, सच्चाई कमाई बंद हो जाएगी तो क्या होने वाला है पता नहीं है. We didn't think over that. So the liquidity management, by understanding the current liabilities, you can better manage your liquidity to ensure you can meet short-term obligations without financial strain. That is, if we are in a financial strain, we should be able to overcome that. शॉर्ट टर्म रहेगा तो वी कैन ओवरकम. अगर हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट समझते हैं, तभी मैंने जो कहा कि अरे मेरा इनकम इतना आ रहा है, अगर मेरा लॉन्ग टर्म ज्यादा है तो या शॉर्ट टर्म में इतना जा रहा है या शॉर्ट टर्म में मैं ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन पे कर रहा हूं, देन आई हैव टू रिकंसिडर और रिफ्रेज दैट. एक पार्ट है ना, आजकल तो बहुत सारे होते हैं. The interest rate, they are every financial institution is offering some interest rate, and we have to find out which one is the lowest. If you have carried for the long term, then you are paying more on the same commodity जो भी आपने खरीदा है वो.
तो आजकल तो आपको अपना ऑप्शन है दैट यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, है ना? नहीं है तो देयर आर मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू वर्क दैट आउट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट. सो द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल बी लोअर. नेचुरल है, अगर मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले रहा हूं तो इंटरेस्ट ज्यादा पे किया जा रहा हूं उसी कमोडिटी पे. व्हेन इन द मार्केट there are many financial institutions who is offering the same commodity or same loan or say same product at a lower interest rate, I have to consider my rupee value. कम होगा तो मेरे लिए अच्छा है, because every amount that I'm not involved in paying back is my saving. Correct? जो मैं कमा रहा हूं उसमें से मैं तो पैसा ईएमआई जा रहा है मेरा. अब ईएमआई जा रहा है तो मैंने सोचा कि अरे हाई इंटरेस्ट रेट वाला मैं कम करके थोड़ा इसमें बचा लूं. यस, दैट इज द टर्म. तो मैंने बचा लिया और वो पैसा मेरा नेटवर्थ में ऐड हो गया, सेविंग हो गया ना, कैश. सो द फाइनेंशियल रेशियोज, इसमें मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा, बट आई विल बी जस्ट टचिंग ऑन दिस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इट. सो द फाइनेंशियल रेशियोज विच डिसाइड your financial ability to take loans or your financial credit worthiness. There are two important ratios that are normally considered. That is debt equity ratio and current ratio. The debt equity ratio is the ratio compares the total liabilities to the equity and indicates the relative proportion of debt used to finance the company or your assets. नॉर्मली ऐसे देखा जाता है, कंपनी के लिए यूज किया जाता है. वो कंपनी अपना पैसा रिलेटिव डेब्ट यूज्ड जो लोन पे लिया है टू फाइनेंस द कंपनीज एसेट्स जो क्रिएट किए हैं वो लोन पे अगर है तो कितने हैं. बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट तो एसेट्स में से वैल्यू भी तो आनी चाहिए. अगर एसेट्स लोन पे ही रहेंगे तब तक एसेट्स फ्री वैल्यू के नहीं है. करेक्ट? Then the current ratio. This compares the current assets to current liabilities and measures the ability to pay the short-term obligations. अभी मैंने कहा कि अगर आपका इनकम कितना है, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज कितने हैं. आमतौर पे ये रेशियोज हम अपनी डेली जिंदगी में नहीं यूज करते, बट आई विल बी डिटेल गिविंग यू डिटेल बिकॉज दिस सीरीज is concerned with creation of wealth. Hence, first let us understand on the individual part. इंडिविजुअल पार्ट में हम लोग एक रेशियो विषय नहीं देखते, हम देखते हैं सिर्फ इनकम कितना आ रहा है, इनकम कितना है, लोन कितना क्या, और मेरे स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज क्या है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी तो है. मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे माँ बाप है, मेरे खुद की बीमारी हो सकती है, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मेरे फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मेरे वाइफ का हो सकता है, मेरे बेटी बेटियों का हो सकता है, एनीथिंग. सो आई हैव टू पे द अमाउंट टुवर्ड्स देयर इंश्योरेंस में, मे बी टू देयर होम लोन रहेगा, कार लोन रहेगा. ये कॉमन है फ्रेंड्स. जैसे ही हम नौकरी पे लगते हैं फर्स्ट थिंग वी इन्वॉल्व इनटू इज द कार लोन, द होम लोन. ये कॉमन है, इसीलिए होम लोन्स बहुत है अपने. I will be talking on that later on when we talk on the loans part. So we have to understand this. ये फाइनेंशियल रेशियो छोड़ो, वो तो कंपनी जब हम इंडिविजुअल कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी अगर जब आप फॉर्म करना चाहोगे तब हम उसकी बात करेंगे, बट विल बी टॉकिंग ऑन दैट. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इनकम कितना है, लोन्स कितने हैं. अगर मैं बैंक के पास जाता हूं, मुझे कोई हेल्प चाहिए या पर्सनल लोन लेना है ना, हम जाते हैं. द बैंक एनालाइजेस what is your income and how much you are paying as the loan part. Then only they will decide whether you are credit worthy to avail their facility. And that is important. That is what I wish to make you understand by this when I'm including this financial ratio part in this total liabilities episode. So you should have the strategic planning. You should understand the liabilities you are owning. You should understand what are your responsibilities and how much prepared you are. How much prepared are you with the emergency fund? How much prepared are you with your investments? How much you are prepared to take on the unforeseen circumstances that life poses. Life तो challenge हमेशा पोज करता है. आप सोचो एक लाइफ कुछ और ही दे रहा है. अब इसकी तैयारी आपने कितने की है. मैं खुश हो गया जब मैं नौकरी लग गई.
मैंने तुरंत नौकरी लगने के बाद अपनी गाड़ी ले ली, स्कूटर ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, जो भी है, we enjoyed the materialistic things, but I had no planning कि आगे चल के क्या करना, क्या प्लानिंग करना। मेरे घर में सब कमा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, सब कमा रहे हैं। Exactly, friends. But this is for you. That is what I stated in the earlier part also, that it is for individual. It is for you. तुम्हारा स्टेटस क्या है? जिंदगी भर तो ऐसा नहीं चलने वाला है, तुम्हारा बड़ा भाई कमा रहा है, माँ बाप कमा रहे हैं, सब कमा रहे हो, तुम ही ऐसा कमा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं ना। तुम्हारा स्टेटस क्या है? व्हाट इज योर क्रेडिट वर्दीनेस? And why should anybody be responsible for your status of credit worthiness, or your financial status, or your financial liabilities also? Hence, we have to understand ourselves. We should have the strategic plan in place for our existence. मेरे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस आई एम वेरी वेल प्लान्ड, नाउ आई एम प्लानिंग माई फ्यूचर। नेचुरल है, अगर फ्यूचर मुझे अच्छा चाहिए तो मुझे अभी से प्लानिंग करना है। अब ये मैं सिर्फ चैनलाइज कर रहा हूं बिकॉज वी हैव नॉट पेड दैट मच ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पार्ट of our life when we initiated our process towards our generation of income। माने क्या, नौकरी के लिए कोशिश की, नौकरी मिल गई, बस हम उसी में खुश हो गए। देन वी स्टार्टेड प्लानिंग, नौकरी में मुझे बढ़ना भी है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमको सब चाहिए, बट वी आर नॉट प्लान्ड। ये कॉमन मिस्टेक है फ्रेंड्स, कॉमन है, सबके साथ होती है। सो प्लान फ्रॉम डे वन, because now it is your individuality that is at stake। You cannot just answer नहीं मेरे माँ बाप का है, ये वो तो ठीक है, वो तुमको मिलने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तुम्हारा क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। So that is what we are addressing, friends. So also the tax implications part, we have to be a good citizen, a law abiding citizen, so we have to pay the statutory requirements। गवर्नमेंट लॉ है, देना तो पड़ेगा, करना भी पड़ता है, because if we go the wrong way, the implications are very bad, friends। आज बचा लोगे, कर कल तो तुमको देना ही है, बाद में उसका क्या होने वाला है पता नहीं। कई ऐसे केसेस हमने पढ़े हैं, अभी न्यूज़पेपर में भी आते हैं, जहां लोग टैक्स इवेड करते हैं, वो इनकम टैक्स वाले आते हैं या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले आते हैं। दैट इज नॉट अ गुड सिनेरियो। Why can't we pay our own liabilities when it is the statutory requirement of the land? We have to. So we have to understand the tax implications of our income also. Correct? We should have that planning। इसीलिए हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं तो हम शुरुआत होते तो इंश्योरेंस में डालते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट गिव्स यू द रिबेट ऑन दैट। इनकम टैक्स रिटर्न्स में भरते समय आपको समझ में आता होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनकम टैक्स रिटर्न पार्ट। प्लीज एवरीबडी go through your income tax return sheet and understand every part, and you will realize कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, तुमने भरा कितना था, टैक्स कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना गया, सब सब उसमें दिखाई देता है। So also whenever you are investing, अभी जो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, उसमें से टैक्स कितना जा रहा है, you will understand कि यार इन्वेस्टमेंट से मेरा इंटरेस्ट इतना आ गया, इंटरेस्ट में से मैंने इतना टैक्स भर दिया, स्टैट्यूटरी था तो भरना ही पड़ेगा, because nowadays tax is deducted at source, with the person who is paying you the interest has to pay the interest by deducting the tax only। So you have to understand the framework of tax and accordingly invest the amount, so that you don't pay extra tax when you are having the avenues for investment। जब आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो डिफरेंट बकेट्स में, टू रिड्यूस द टैक्स implication। मैं ये नहीं कह रहा हूं टैक्स इरोड करो या इवेड करो, नो नो नो, आई एम नॉट स्टेटिंग दैट, आई एम जस्ट स्टेटिंग कि अगर एक इन्वेस्टमेंट पे करते ही जा रहे हो और उस पर टैक्स भरते ही जा रहे हो, जब दूसरे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है या किसान विकास पत्र है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, द गवर्नमेंट की ऑप्शंस है वो, और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, व्हाट इज द ब्रैकेट यू आर इन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड देयर आर मेनी एडवाइजर्स, दो सीएज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं,
जो ऑफिशियल होंगे वो कीजिए प्लीज। ऑफिशियल माने हियर से वाला नहीं, कोई बोलता है इसको इन्वेस्ट कर दे, हम कर देते हैं तो वो लॉस है, वही तो मैंने कहा, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स. So when we understand the tax implications, when we understand the interest what we are earning, when we understand that where our expenses are going, then we realize where we stand financial. इसमें देखो, जब आप अपने खुद का टैक्स रिटर्न देखो तो उसमें माँ बाप भाई बहन का नहीं आता है, आपके खुद का आता है. So that is what you are. मैं हमेशा कहता हूं, भाई बहन माँ बाप उन्होंने जो भी किया है, उनका जो भी एसेट्स रहेंगे उसमें आपका हक रहेगा, वो आपको मिलेगा, माँ बाप देंगे, वो अलग बात. हम अपना स्टेटस क्या है पहले जान लेते हैं. Where I am standing financially also, what is my credit worthiness in this world, whether I am credit worthy. सवाल आएगा ना जब बैंक अगर आपका रिजेक्ट करता है लोन, बहुत बुरा लगेगा ना आपको, क्या रे यार मैं तो बड़े भरोसे में था, मेरा इतना सब कुछ है. प्रॉब्लम आता है. या बैंक वाला बोलता है गारंटी चाहिए. आजकल गारंटी कोई लेता नहीं है ना, बहुत रेयरली पीपल हैव एग्री टू नाउ टेक अ गारंटी, एंड यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर समवन मेरा गारंटी ले लो. सो एम्बैरेसिंग. So understand your credit worthiness, friends, that is more important, and hence the net worth part becomes important part to be understood. So the total liabilities play the pivotal role in shaping the financial landscape of yourself. I'm not talking about business, of yourself or your business also. The proprietorship रहेगी, partnership रहेगी, company रहेगी, जो भी रहेगा वो. They influence net worth with the financial wealth and strategic decision making. Understanding and managing liabilities effectively is essential. It is essential for long-term financial stability and growth. By keeping liabilities in check and using debt strategically, entities or yourself can enhance your net worth and achieve financial success. Yeah, strategic planning मैंने बोला. Now, I have included you and as a person and company also. That is why थोड़ा सा जंबल अप हो रहा है कि अरे कंपनीज का भी मैं बोलते जा रहा हूँ. If you are having a proprietorship concern, you will have to consider all these things. So friends, total liabilities are important in enhancing your net worth. You have to reduce your liabilities. You have to understand the effect that is directly impacting on your financial status. We again discuss the liabilities part in detail with the importance of the liabilities and how to reduce that and what checks you have to have so that your net worth enhances. ऐसा नहीं होता कि liabilities कुछ नहीं है. नहीं है तो बढ़िया. There is nothing good than that. But liabilities business में होती है और individual में भी होती है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हाउसिंग लोन लेना है तो preferably you go with the organization because they have got many entities working from them. Then the tax वाला देखता है, फिर they have got various entities who look into the details of that particular housing loan or home loan that you are availing, which I individual उसको करने में टाइम लगता है या उसको कॉस्टिंग ज्यादा होती है. तो ये लायबिलिटी है. I'm not advising car loan, but I'm always state कि अगर हाउसिंग लोन ले रहे हो तो प्रेफर दैट यू गेट इट डन फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन. वो जो पेपर्स है, एग्रीमेंट्स है, स्टेटस है, they get it done from the professionals. The fees you have to pay lump sum to them, whatever that 1% or whatever they are charging. That is where negotiating part comes in the total liabilities part. I will be discussing that in the next episode. So friends, balancing liabilities is the most important part, the key part for unlocking the sustainable net worth growth. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of the Midas Touch Wealth Foundation to Wealth Mastery Journey with Vikas Joshi. Till then,
Bye bye. Enjoy the day. Enjoy the life, friends. It is a one time activity. Do enjoy.